टू अनदर डे एंड सभी का स्वागत है। तो आज आए हैं हम लोग एम्बियंस मॉल। वी आर जस्ट कम टू एम्बियंस मॉल और आज हम लोग आज का दिन का बारे में बेसिकली कुछ शॉपिंग करने वाला है। मुझे कुछ चीज़ चाहिए था दी कैटलॉन से और कल प्रिया का बर्थडे है, तो मैं सोचा आजा दी एम्बियंस मॉल में एंड हैव अ लवली डिनर ताकि बर्थडे ब्रिंग इन करें हम लोग। एंड देखते हैं, एक और चीज़ है जो हम लोग को टीवी का भी थोड़ा रिसर्च करना था ख़रीदने के लिए, तो चलो अंदर जाके देखते हैं। एंड ये देखो एम्बियंस मॉल बाहर से कैसा दिखता है। तो ये रेस्टोरेंट है, कैंटनीज रेस्टोरेंट है एंड इट हैज़ सम अमेजिंग कुजीन। इट हैज़ वियतनामीज, इट हैज़ बाओ, इट हैज़ डिमसम, सुशी एंड जो सेटअप है इट्स बेसिकली ऑन द टॉप फ्लोर, सो द एनवायरनमेंट इज़ अमेजिंग, द एटमोसफियर इज़ वेरी चिल वाइब्स। एंड हम लोग दूसरे जगह भी जाने वाले हैं जो अलग साइड है एम्बियंस मॉल का, और उधर अगर कोई अच्छा रेस्टोरेंट है तो उधर भी जाके देखिए। एंड आज ये ब्लॉग उसके ऊपर ही है जो हम लोग अपना रेस्टोरेंट के ऊपर बनाने वाला है एंड कौन सा रेस्टोरेंट अच्छा है, उसका एम्बियंस कैसा है, उसका सर्विस कैसा है एंड फूड क्वालिटी कैसा है। और प्रिया का बर्थडे कल है, सो वी आर थिंकिंग टू ब्रिंग इन द बर्थडे एट 12 लेट नाइट डिनर करके। एंड कल तो एक अलग सीन ही है। आज अभी एक मस्त हॉट चॉकलेट जो हम लोग का रिचुअल है, इट्स ऑलवेज अ रिचुअल टू हैव अ हॉट चॉकलेट एवरी टाइम वी गो टू अ मॉल। तो ये और हम लोग हमेशा हॉट चॉकलेट शेयर करते हैं। सो देखते हैं, लेट्स सी एंड लेट्स गो टू द रेस्टोरेंट एंड उधर से ये ब्लॉग चालू करते हैं। स्टे ट्यून। तो गाइस अभी अगर हम लोग मॉल आए हैं तो हमें फुटबॉल खेलता है एंड उसकी वजह से जो दी कैटलॉन देखा जो उधर है, उसके लिए मुझे फ़ुटबॉल के लिए स्लैक्स चाहिए था, तो सोचा वो भी ले लें एंड थोड़ा शॉपिंग कर ले। अभी आया है तो शॉपिंग करना ही पड़ेगा, ऐसा बिना शॉपिंग करके जा ही नहीं सकते। लेट्स गो गाइस। तो गाइस ये है फुटबॉल स्लैक्स बेसिकली जो अंदर पहनते हैं हम लोग, ये बेसिकली विंटर्स में पहनते हैं हम लोग एंड ठंड से थोड़ा बचता है बट ब्रूजेस से भी हेल्प करता है थोड़ा एंड इट हेल्प्स इन ऑब्जर्विंग द स्वेट। तो ऐसे अंदर एक उसके ऊपर शॉर्ट्स है। चलो लेट्स गो। So, how was your shopping experience? सो बैड। Harsh shopping. तो बेसिकली हम लोग 2 मिनट में ये लेते हैं 2 मिनट में। तो बेसिकली लड़की लोग का शॉपिंग कितना टाइम लगता है, कितना टाइम, और हम लोग का देख कितना फट से हो गया 2 मिनट के अंदर ही। हम लोग ने एक पैंट खरीदा, तो पैसे देखे, पैसे ऐसे बोला पैसे हाथ का मेल है, यही है। चलो अभी हम लोग जाएंगे डायरेक्ट डिनर के लिए एंड प्रिया का जो है आज का बर्थडे नाइट, लेट्स स्टार्टेड एट द हाई नोट। व्हाट्स अप प्रिया? Yes, of course. एंड कल थोड़ा दोस्त लोग आएंगे, थोड़ा होमली वाली फीलिंग कल, तो आज अभी इसका डिनर सेलिब्रेट करते हैं एंड लेट्स गो गाइस, लेट्स सी व्हिच रेस्टोरेंट इज गुड। ये बेल्जियन फ्राइज है, ये रिकमेंडेड है, इट्स वेरी नाइस। और अभी हम लोग एंटर करने वाले DLF प्रोमेनाड इस साइड पे, ताकि ये रेस्टोरेंट्स जो है इस साइड पे, ये अभी थोड़ा लग्जरी स्टाइल बोलते हैं ऑफ द एम्बियंस मॉल, तो जाके देखते हैं। अलग ही स्टाइल है एंड इट्स वेरी लग्जरियस अकॉर्डिंग टू मी, तो जाके देखते हैं।
देखने में कोई टैक्स नहीं नहीं चलता है, हाँ। बट इधर का रेस्टोरेंट जो हम लोग आगे देखे थे पहले, इट्स मोर वाइबिंग, इट्स मोर बेटर। एंड इधर स्टोर्स और आउटलेट्स जो है ब्रांड्स है, ये प्रोमिनेंट साइड पे, ये थोड़ा अच्छे ब्रांड्स है। सो लेट्स गो, चलो। तो अभी जो हम लोग ने आपको देखा था वो DLF प्रोमिनेंट का आउटसाइड व्यू था, आउटडोर, जो आउटडोर एरिया भी अलाउड है बैठने के लिए। एंड इट्स अ वेरी अमेजिंग वेदर। क्या बोलते प्रिया, हाउ वाज इट? So the weather is amazing, guys. You must come out. This is the best time to sit out in the mall and outdoor way and to have a nice drink, beers, dinner. And I would definitely recommend anyone जो भी इधर आके इधर खा ले भाई, and enjoy the weather. दिल्ली का weather either it's too cold or too hot, but ये weather बहुत सही है भाई। So finally we chose the restaurant, guys. It's Thai experience, but we'll be going to Kylin Sky Bar. And this is Daniel's favorite, alcohol. reveal. So guys, this is the dimsum. Steamy. They have given some condiments here.
some chili oil and vinegar. Now Mr. Daniel will give you the review. Oh. How is it? 5 star. Now Mr. Daniel Jashnani will give you the review about the green Thai curry. How is the taste? Authentic? Very nice. So guys, we just finished our dinner and this dinner was amazing. The place and the ambience was crazy. I ordered a Thai green curry chicken जो मैंने ऑर्डर किया था और प्रिया ने ramen ऑर्डर किया था जो कोरियन स्टाइल था स्पाइसी एंड डिमसम हम लोग ने चेंज किया था लास्ट मिनट हम लोग ने क्रैब वाला डिमसम ऑर्डर किया था जो अमेजिंग था. इट वाज वर्थ द मनी. 2000 का बिल में एक्चुअली it was quite worth it and the ambience is also amazing. So I would definitely recommend this restaurant and ये है Kylin and do not go to the ground floor, go towards the Sky Bar and the ambience is amazing out there. So if you like such content, don't forget to like, share and subscribe. Day to you, happy birthday to you, happy birthday dear Priya.